Hello students, through this video today I am going to tell you about the league championship for the classes 4, 5 and 6. Okay, as you can see on the screen, here is the science champs junior class 4, 5 and 6, senior class 7, 8 and 9. So in with this video we are going for the junior section, science champs and also English champs. The sections are same: junior class 4, 5 and 6, senior class 7, 8 and 9. Let's first see about the science champs. So here you can see in the science champ, it is also for grades 4, 5 and 6. The entry type is individual, means you have to participate single, individually. Okay, and your submission will be either in the form of images, PDF file that will be having the size about 5 MB. Okay, and your content should be in English. Let's first of all see that what actually you need to do in this project. Okay, so student will identify a problem which they will design or create a model to solve using things find in and around their home. First of all, look for this template for science projects. Let's have a look. So you can see this is your template. You have to take this. Okay, you have to make this chart in your notebook, or if you find it convenient you can take it print out also. ठीक है, इसमें आपको ऊपर अपना नाम लिखना है, स्कूल नेम एंड क्लास. नाउ आपको करना क्या है, व्हाट इज़, आपको कोई एक प्रॉब्लम ऐसी जो आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. अब जो प्रॉब्लम है उससे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है. What are the things that you need to solve the problem. Now you have to think that how actually you can solve that problem. Okay, and what steps you are going to solve that problem. वो problem कैसे solve हो सकती है और उसको solve करने के लिए आप कौन कौन से step ले रहे हैं. ठीक है, and you have to explain that logical as well. फ्रॉम द व्यू ऑफ साइंस आपको बताना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंट है. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस चार्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द, you can explain it with the help of a model as well. These are the things that you have to do. It is actually the qualifier round. Now what are some do's and don'ts, let's see. So state the problem clearly. जो भी प्रॉब्लम जिसके बारे में आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, that must be clear. Okay, whatever is your model through which you are going to solve that problem, also you have to state its working कि आपका मॉडल काम कैसे करता है. Okay, you have to make them in your notebook. Okay, and do not take the help of your internet. The ideas should emerge from your side. जो भी ideas हैं वो आपके ही ideas होना चाहिए. And internet uploaded image will not be submitted. Okay, so and the process for submission, how you have to submit. So जो भी आपका ये चार्ट है उससे रिलेटेड मॉडल है, आप उसकी इमेजेस या फिर PDF फॉर्मेट में आपको उसे अपलोड करना है. अपलोड कैसे करना है, सो एज यू कैन सी हियर डाउन ऑन द स्क्रीन, सबमिट योर एंट्री. सो यू हैव टू क्लिक हियर. व्हेन यू विल क्लिक हियर यू विल गेट एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर. ओके, सो जो भी आपका लीड में रजिस्टर्ड नंबर है आप उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे and then you will receive an OTP. Through that OTP you will sign in. Now select the category. So it is science champs junior. Check the details of your project and upload your entry here, and once the upload is complete you click on the submit button. I hope that you must have got it. Now let's move towards the English champ. It is also having the category junior class 4, 5 and 6. Now let's see what is actually happening.
It is for junior category. Here also the entry type is individual and submission is maximum of the 2 minutes. It should be in English. Category is storytelling and submission language is English. Now what actually you have to, what video you have to record, let's see. The first part of the story is given. Continue this story and narrate with correct expressions, creativity, intonation and dramatic वॉइसेस. आपको एक स्टोरी का कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट दिया हुआ है, उसकी नेक्स्ट जो भी उसके आगे की स्टोरी है वो आपको खुद से ही एक अच्छी स्टोरी फ्रेम करना है. एंड नॉट ओनली यू हैव टू राइट, यू हैव टू नरेट इट. आपको उसे बोल करके बताना है along with the expressions, वॉइस इंटोनेशन, जो भी जैसी भी आपकी स्टोरी है उसमें जैसी वॉइस रिक्वायर्ड है, वॉइस का डाउन, वॉइस का राइज कहाँ पे करना है, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ इंग्लिश में आपको उस स्टोरी को एक्सप्लेन करना है. ओके, सो सम थीम्स हैव बीन गिवन लाइक a box is delivered to your house, there is no sender's name on it, you open it and find what's inside the box. Next, a monkey at the zoo. इस तरीके से आप देख रहे हैं आपको बहुत सारे यहाँ पर थीम दी हुई है. So choose any one of the theme, complete the story using that theme, record a video of yours and you have to again upload it. The uploading procedure will be same. And some do's and don'ts, that your video, your voice should be clear, the video should be recorded in a noise free place, your look should also be very good, wear clean clothes. Okay, and before you record your final video, practice it multiple numbers of time so that you cannot be making mistakes. Okay, and your video must be of the duration up to 2 minutes only and the file should be 100 MB and no video should be uploaded from internet. You have to create your own story. एंड द अपलोड करने के लिए जैसे मैंने आपको साइंस चैम्प में बताया है, सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप इंग्लिश चैम्प की वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक पार्ट इन लीड चैम्पियनशिप, record your videos and upload them fast. Okay, thank you.